Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and now we'll be solving the second part of the answer key of 2026 examinations English literature paper. Okay, तो we'll be having a brief review इसके जितने भी questions हैं और आपको एक basic idea दे देंगे कि ये चीज़ें if you have written तो well and good these things were supposed to be written. Okay, so the first question in question number 3 says that the repeated appearances of Banquo's ghost impact the banquet as well as Macbeth, no doubt. ठीक, तो you have to tell that how does it do so कि मतलब उसका असर क्या होता है बैंको के घोस्ट जब वो रीअपियर करता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैंक्वेट और मैकबेथ के ऊपर. ओके, तो दिस इज़ असेंबल्ड हेयर. तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि बैंको का घोस्ट जो है दैट is because it exposes the Macbeth's inner guilt and instability to his guest. ठीक, he is means filled with horror and fear is speaking to an empty chair. सारे थेन्स बैठे उसके ठीक सामने, आप empty chair से बात कर रहे हो. Then Lady Macbeth attempts to cover it. फिर घोस्ट आता है, फिर वो उसी हालत में हो जाता है. आप वो नेवर शेक दाई गोरी लॉक्स वाला जो एक कोट है दैट ऑल्सो यू कुड हैव मैंशन. देन इसका ये जो रिपीटेड नेचर ऑफ द अपीयरेंस है इट प्रिवेंट्स द बैंक्वेट टू कंटिन्यू नॉर्मली. बैंक्वेट भी सही से नहीं हो पा रहा है एंड इवेंचुअली लेडी मैकबेथ ये रीज़न दे करके कि ही इज़ हैविंग फिट्स दैट आर फ्रॉम हिज यूथ, उसको दे करके उस चीज़ को वहीं पर ही क्लोज कर देती है. इवन लेडी मैकबेथ फर्दर सेज कि डोंट वेट फॉर द ऑर्डर टू गो, प्लीज़ गो एट वंस. ठीक, तो ये दीज थिंग्स वर कैन बी टेकन अप जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो. Then after this is the next question referring to act 5 scene act 5 of the play Macbeth. You have to describe the final confrontation between Macbeth and Macbeth's unwillingness to kill him, Macduff, and Macduff's revelation and its consequences. मतलब कि मैकबेथ पहले ही बताता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ बिकॉज ऑलरेडी you have to write this that already my soul is too charged with blood of thine already, in the sense कि तुम्हारी फैमिली को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ. तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन. सेकेंडली that when Macduff tells about this that he was from his mother's womb untimely ripped, means he had a cesarean C-section delivery, तो ही इज़ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न इन अ कन्वेंशनल सेंस. तो इसका मैकबेथ रियलाइजेज दैट विचेस ने उसको डिसीव किया है, उसको डिच किया है एंड डिस्पाइट नोइंग इज फेट. अब उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, जब सारी की सारी प्रोफेसीज विचेस की रॉन्ग हो गई है तो ही स्टिल हैज़ दैट करेज, वो खुद को सरेंडर नहीं करता है. ही स्टिल हैज़ द करेज टू फाइट. ओके, दस बट स्टिल एट द एंड उसका डाउनफॉल हो जाता है इन द सेंस कि हिज टायरेनिकल रेन एंड्स बाय मैकडफ किलिंग हिम इवेंचुअली. ओके, फिर बोला गया है द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है. मतलब दीज आर द पॉइंट्स कीवर्ड्स दैट आपको उसमें लिखने होते हैं. फिर नेक्स्ट इज हाउ डू द एक्शंस एंड मेंटल स्टेट्स ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ रिवील देयर इनर गिल्ट. ओके, तो यू हैव टू टेल दिस इन लॉन्ग आंसर. सो दोनों ही गिल्ट में थे, मैकबेथ भी और लेडी मैकबेथ भी. बस फ़र्क इतना है कि इनका जो गिल्ट था वो उसको अंदर ही अंदर खा रहा था, इन द सेंस कि उसको उसके सबकॉन्शियस को अंदर जो मेंटल टर्मोइल है वो था, और इसका जो गिल्ट था इट वाज लीडिंग हिम टू मेक डू मोर ऑफ वायलेंस. Okay, Macbeth's guilt drives him to further violence. He plans for the murder of Banquo and Macduff's family. लास्ट में इवेंचुअली वो पूरा मतलब आफ्टर एंड इवन ही वाज सो मीन्स कंट्रोल्ड इन हिज इमोशंस की लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में भी ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. एंड लेडी मैकबेथ पर इसका क्या असर हुआ था, ही शी वॉज मीन्स मटरिंग इन हर स्लीप वॉकिंग सीन. She was continuously seeing that invisible blood stains and speaking that out damned spot out. This reveals that her psychological distress and indelible strain, her मतलब so much weight she was having of the death that she eventually commits suicide also. Okay, then
The next question. Long answer, either of them has to be done. Then discuss how Macbeth's repeated visits to the three witches show his inability to take correct decisions and lead to his subsequent downfall. तो ये क्वेश्चन इससे बताया गया है कि उसकी रिपीटेड विजिट्स का मतलब ये होता है कि मैकबेथ के खुद के पास बुद्धि नहीं थी कि वो कोई भी करेक्ट एक्शंस ले सके एंड इट लेड टू हिज subsequent downfall. So what was the reason behind it? Yes, it demonstrates that he has no ability to have his own judgment, leading to his insecurity and eventual downfall. उसको जितने भी अपैरिशंस के बारे में बताया गया था, नन ऑफ वुमेन बॉर्न, ग्रेट विनम वुड, ये सारी चीज़ों से ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट, बट he misinterprets these riddles literally, believing himself invincible. और उसको eventually ये समझ में आ जाता है that he is invincible. Ultimately, his reliance on the witch's vague language and his failure to question leads to his downfall, and the prophecies he believed would secure him have actually manipulated him to his destruction. ठीक, तो these things were supposed to be written. You can further add up कि जो prophecies हैं वो गलत भी हुई थी, but the question that has asked is कि उसको ये चीज़ पहले से ही नहीं बिलीव करनी चाहिए थी कि हाँ these things are going to happen. Okay, then is ISC part of Prism. First one, Tarapada repeatedly leave his home and go on the various adventures. In short story, Aditi, why does he choose to stay with Motilal Babu? Next question is that you have to tell Tarapada's motivation to Tarapada's repeated departure, कि बार बार वो भाग जाता था अपने घर से, and second कि why was he staying with Motilal Babu? Both the reasons you have to tell here. So and the first statement says that he repeatedly leaves home due to inherent inborn urge to break free from the bonds of affection and routine. जो एक डेली रूटीन है, जो एक बॉन्ड है ऑफ पीपल, वो उन सब से ही वो दूर भागता था. उसका जो बेसिक नेचर था वही इंडिपेंडेंस थी, वही वॉन्डरलस्ट था. ठीक, ही हैड अ रेस्टलेस सोल, जिसको फ्रीडम ज़्यादा पसंद था. सेकेंड, ही चूजेस टू स्टे विद मोतीलाल बाबू. रीज़न बिहाइंड कैन बी द वेलकमिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो अपने टैलेंट दिखा सकता है, वो फ्लूट, सिंगिंग, and he is charmed by the affection that was shown by Motilal's wife and the intellectual companionship of Motilal. But when he was supposed to tie the knot with the daughter जिनके साथ इसका रिश्ता तय हो गया, तो ये तुरंत भाग जाते हैं because he knows कि now commitment is not his cup of tea. Okay, then next is Anirudh finds a notebook in the डाक बंगलो that was of the British planter. तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है. उसमें क्या लिखा था, अब ये मुझे आई पर्सनली फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है, इवन दो दिस इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट स्टिल एक होता है ना कि आप स्टोरीज में स्टोरीज भर सकते हो, बट देयर यू कैन नॉट फिल द स्टोरीज बिकॉज वो आपसे बड़ा बड़ा लिख करके भेजे कि कंटेंट ऑफ द नोटबुक उनको चाहिए. ठीक है, अब योर ओन नोटबुक, यू ऑल आर ऑथर्स, आप अपनी खुद की बुक्स बनाते हैं, वहाँ आंसर शीट में वहाँ उनकी कंटेंट ऑफ बुक्स कैसे लिख दें. ओके, तो ही फाइंड्स अ नोटबुक देयर, ठीक है, जहाँ पर वो जाता है रहने के लिए डाक बंगलो में. तो देयर द नोटबुक कंटेन्स अ चिलिंग कन्फेशन ऑफ द प्लांटर्स फाइनल मोमेंट्स एंड इट वॉज अ डेट इफ़ यू वुड हैव रिमेंबर्ड. तो कंटेंट्स क्या थे, पहला था कन्फेशन ऑफ क्रूल्टी एंड ग्रीड, कि planter was exploiting the native peasants, acknowledging that he was treating them very very poorly. Guilt and fear was there, that his deep guilt for his actions, loneliness, intense fear that no one will mourn him, and shares his regret over his corrupt life. He had malaria also. Okay, and he was unable to make a return to England, and the fate of rest, he was even afraid that the locals would harm his dog. Okay, the diary are written in trance-like state by Anirudh, acting as a direct link to the dark 100-year-old history of Banglo. फिर लिखा हुआ है कि उसके कारण आप ब्रिटिश प्लांटर जो था उसके लिए क्या बता सकते हो, that the guilt that the British planter carried off
was suppressing the natives, when it is about him, कि this is one of the characteristics. Then second characteristic can be the fear of the consequences of his actions. The British indigo planter was product of his times. Like most planters, he was cruel and had oppressed the native peasants. तो दोनों ही चीज़ें उसके बारे में थी. Okay, then next question is Bubber's meetings with Mrs. Drew eventually led to the tragic end in the short story Cookie Lady. Do you think that parents could have prevented the tragedy? Yes, no doubt. Parents could have prevented. How do the meetings with Mrs. Drew eventually lead? तो इसमें the uncontrolled behavior of Bubber, because every time he was unaware, they expose him to the danger his parents were unaware, allowing him to be lured away and untimely killed. His parents could have prevented the tragedy by being more vigilant, communicative about the eccentric neighbor. एक तो वो neighbor बहुत strange थी, ठीक है, जो भी उसके घर के आसपास कहीं पर भी रहती, थोड़ा दूर ही रहती थी, बहुत पास में नहीं रहती थी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, द पेरेंट्स शुड हैव प्रॉपरली मॉनिटर्ड और इवन एक्नॉलेज दीज फ्रीक्वेंट विजिट्स इज़ अ क्रिटिकल ओवरसाइट. उनको ये भी समझ में आ जाना चाहिए था पेरेंट्स को कि दीज things can be harmful for the child as well, and cookies are the things जो if the lady can make, it can be brought at home also, can be made at home also. But वो जो negligence था, not discussing the potential dangers of interacting with strangers and even acquaintances without supervision. कि कोई बच्चा बाहर जा रहा है, आप उसको देख भी नहीं रहे हो कि वो किससे मिल रहा है, और आप उसको सुपरवाइज भी नहीं कर रहे हो, इवन जान पहचान वाला है तब भी आप नहीं देख रहे हो, तो obviously it has led to the killing of Babur. ठीक है. Then next is, and this document of answers I will send you to Telegram, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो, ठीक है. In the short story, if you want to read it, the medicine bag, author addresses the themes of cultural identity and generational differences. So you have to tell about this theme here, जिसमें कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स ऑब्वियसली उनके जो मार्टिन के जो ग्रैंड पेरेंट थे वो मतलब द वे ही यूज टू लुक, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी. बैगी पैंट्स, टायर्ड लुक, ट्रेडिशनल एंटायर, दैट वाज कंट्रास्टिंग फ्रॉम द अर्बन life. And the generational difference is how Martin struggles to understand the value of dirty leather pouch, that is the medicine bag, around his grandfather's nets, that is a sacred medicine bag. The visit shifts this perspective. Now Martin's friends visits and they are mesmerized by the old man's stories, showing Martin that his culture is very much valuable. Okay, the pivotal moment occurs जब grandpa explains the history of the bag containing the broken iron kettle, symbolizing adoption, and the sacred sage. So this reveals that the bag was intended for the male heir, passing it to Martin. Okay, so this is the generation gap is also shown here. As after following his grandfather's death, Martin accepts this role as a custodian of his culture. तो these things were supposed to be mentioned. Next is the part of Rhapsody, जिसमें सबसे पहले is death be not proud. What are the reasons for negating death and any two instances of challenging death that are asked him. Means you have to tell कि how does a poet challenge death in the poem Death Be Not Proud. So sorry. This can be written as that it is not as powerful as fearsome it seems. It is an assertion because it does not truly end life but serves as a passage to it eternal afterlife. The poet further argues that death is a slave to fate, chance, kings, and desperate men, and is forced to dwell with war, sickness, poison instead of its lack of true autonomy to power. ठीक है, तो मतलब ये this has been told here कि death is a slave that has to be mentioned. दूसरी चीज़ की the two challenges, instances of challenging, comparing death with sleep and rest, ठीक, was the first, and stating that after the short sleep we wake up eternally. मीन्स हम लोग ये कह रहे हैं कि डेथ बहुत पावरफुल नहीं है. फर्स्ट थिंग क्योंकि वो
स्लीप और रेस्ट के जैसी है. सेकेंड थिंग कि इवन इफ वी स्लीप वी वेक अप इटर्नली and death shall not be no more. Death thou shalt die. फिर next is how does a boon becomes a curse in Tithnis. You have to mention the boon of immortality and the implications, मतलब the what is the end result of this these boons जो उसको मिला था. ठीक है, तो द इमोर्टैलिटी इट बिकम्स अ कर्स बिकॉज टिथनस कंटिन्यूज टू एज फिजिकली एंड मेंटली वाइल हिज लवर एओस रिमेन्स यंग इटर्नली. ठीक, ही इज अ प्रोटैगनिस्ट. द मॉर्टल मैन आस्क एओस टू the goddess to grant him immortality but forgets to grant him eternal youth that was not given by Aurora. इसका implication क्या होता है? He cannot die. His body continues to age, wither and decay. He is trapped in the state of physical decrepitude. A shadow, आप उसमें ना ड्रीम लाइक बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई गई थी, तो दोस्त यू कैन राइट दैट ग्रे शैडो वंस अ मैन. these statements you can write here. ठीक, वो एंड इन दिस एंटायर पोएम ही वॉज जस्ट क्राइंग ओनली. तो आप बहुत सारे उसमें से कोट्स निकाल करके लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट इज अ लॉन्ग आंसर. द फर्स्ट वन इज बीथोवन्स determination is and his ability to adapt himself to circumstances to create divine music. तो you have to tell about this. ठीक है, जिसमें you can explain his determination and his adaptability through various key references. जैसे first was deafness as a barrier. It shows that it is silence, a cruel wall arose, cutting him off from the world of sound he cherished. ठीक, but the poem uses the imagery of an inner ear and soul's deep sea to convey his reliance on his internal music genius. Okay, then adaptation and perseverance. He adapted his methods, continuing to compose even when he could no longer hear the physical one. वो जो amputation of piano's legs था, that also you could have mentioned here. Okay, and then legacy of strength. The poem ultimately portrays him as a symbol of human spirit to overcome immense hardship through sheer will and adaptability, and leaving behind the legacy that echoes is still in the hearts of listeners. Then next is telephone conversation. Very easy, sweet poem. Do you feel that the landlady and the speaker could have mutual understanding? कि क्या वो mutual understanding पर आए होंगे? पहला बताना है कि आपको इस poem से क्या समझ में आया. Second, you have to tell that the landlady and the speaker could have come to a mutual understanding. Obviously not. Okay, could not have come to a mutual understanding because of the lady's prejudice and the speaker's firm stance on self-respect that has created an insurmountable barrier. ओके, अब इससे क्या समझ में आता है? हम इससे इवेंचुअली क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो स्पीकर है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, आर्टिकुलेट एंड प्रेगमेटिक मैन who is seeking accommodation. He is black, but his primary concern is which he addresses directly is to ascertain the landlady's racial bias, wasting his time and money. मतलब वो नहीं चाहते कि उसको वापस जाना पड़े. तो he very clearly gives a self confession that madam, I am African. His language is polite yet direct, showing a desire for the fair treatment. But eventually जब the questions shift from about light or dark, this demonstrates a lack of empathy and the mindset that reduces the ratio stereotype rather than a potential tenant. तो landlady के बारे में ये चीज़ें बोली गई थी that her initial politeness is quickly faded when she realizes that the speaker is black. That is why it was told as lipstick coated. Okay. So the mutual understanding would have required both parties to engage in a respectful, open dialogue. That was not possible here. Hence, there was no mutual understanding among them. Okay, तो I hope कि आपका जो exam था वो अच्छा हुआ था. And these are the keywords that you would have written. You can share it with your friends also. This document I'll be sending you on
टेलीग्राम डीवा क्लासेस आप एज इट इज़ नहीं, येस ऑब्वियसली दिस आर जस्ट द असेंबल्ड थिंग्स जो हमने आपको बताई हैं, बट आप इफ़ यू वुड हैव रिटन एनीथिंग नियरर टू इट अलॉन्ग विद द कोड्स, तो it would be a better good answer. I hope you may get the laurels you want to in your exams of literature. Okay, and now keep preparing for your next exam. Best wishes. Thank you.